we were talking about, right, that when we determine the cash inflows, annual inflows, what we start with, the sales revenues, right? And from sales revenue, when we subtract variable cost, we come to know about contribution margin that has been made during the year. From the contribution margin, what we do, we subtract the fixed cost, and that fixed cost may be cash or non-cash. But if it is a fixed cost in cash, it's a cash outflow. And we are trying to determine cash flow. So it should be very well deducted. So no problem with that. But the non-cash fixed cost like depreciation, amortization and all, they are to be deducted in order to save taxes, because due to them no cash flow is happening, neither inflow nor outflow. Whatever cash flow was supposed to be happened, it happened in the beginning of the life of the project, or what I mean to say that when you bought this project, this asset, you paid for it and the cash flow happened. So due to this depreciation and amortization part, no cash inflow or outflow is happening. Then we came to know about a term which is EBIT, earning before interest and tax, or PBT, profit before tax, or EBT, or whatever call. This is income which is before, yeah, EBIT or EBT. Now why I? Why not I? Because interest is component of financing cost, so we should not keep it in the investment cost. Its impact will be there through discount rate. So if you keep it here, it will be a case of double accounting, where it is getting accounted in determining cash flow also and in determining discount rate also. So we decide that, okay, we'll not keep it here. And from this amount, when you subtract taxes, then we get profit after tax. Now, when you, because in the beginning you had subtracted a depreciation amount, and this depreciation amount was non-cash. Due to this, no cash flow happened, and earlier you subtracted. But whatever equivalent cash is there, it is there within the firm. Therefore, we add it back to get the cash flow after tax. And we assume that this is our free cash flow. So this free cash flow can be reinvested. It is easily available for us. It is not tied with this particular project, and this can be freely invested in elsewhere. Now, what Pooja is asking is the following. She is saying that you at this level added back, you subtracted increase in net working capital and added decrease in net working capital. Pooja, am I right? Yes, sir. So the question is why so? Why an increase in cash flow is decreased? Why an increase in net working capital is decreased, and why a decrease in net working capital is increased? First, understand, till here, our assumption is that, by default assumption is that all sales are happening and all payments are happening in cash. When your net working capital will increase, what is net working capital? Total current assets minus total current liabilities, which is equal to inventories plus debtors plus cash minus, I'm just taking the broad categories, minus creditors minus payables. Now, when this net working capital will increase, this net working capital will increase. Now, to this component, this is your investment.
If you want to hold higher level of inventories, you will need to invest more. If you are giving liberal credit to your customers, the debtors will increase, but you will have to invest. You will have to invest in the form of raw material, wages and labor and overhead expenses. But the payment will come later. So you will have to invest. Or you want to hold higher amount of cash in hand, then also you need to invest. This means this part of net working capital is cash outflow. And what are you trying to determine? Cash inflows. Now, before you invest elsewhere, you need to provide for all cash that is required for the current project. Once the cash flow which is getting generated out of this project is free from this project, then only it can be utilized elsewhere. And these are financing. These are the investment required, but these are financing, creditors and payables. These are the financing for these investment requires. Now, when will this net working capital increase? If any of these components increase, it means if there is any of these components increase is greater as compared to increase in this, so on net part I will have to invest. And if you will have to invest, this means whatever cash flow is here is completely not available. Some portion of it needs to be invested in net working capital, and therefore we deduct it. What if there was a decrease? Decrease means what? Debtors got converted into cash. The cash was surplus with me and available. Now it becomes available now. I decided to manage a lower level of inventory, or the creditors offered me a better credit policy or credit terms. In all these cases, I have surplus cash available with me as compared to if this was not available to me. So more than what this project is offering, I have available and I can invest. That is why I'm adding it back. I hope it solves your problem, Pooja. Yes, sir. Now it's clear. So any other query I'm asking for the last time, or I'll just proceed further? Okay. Now you must be remembering what we did. We first determined different cash flows of the year based on a question for which the basic details were given like this, that we people were buying a plant that cost rupees 5 lakhs. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, can you please share this Excel sheet with Pratibha so she can share in class? 100%. After today's class, I will share. And Thank you if so I much, sir. forget to do that, Pratibha may just give me a ring and I can definitely share it with her. Okay? Or she Yes, can sir. just text me. So, also the plant life, we decided that the net increase in working capital is this much. Salary is this much and maximum output capacity is this much per year. The depreciation is charged for straight line methods every year will remain same, and the required profit is 10%, and the tax rate applicable to the company is 40%. So we determined every year we need to provide for 49,000 as a depreciation amount. The initial cash outflow was rupees 6 lakhs. Okay. And this extra thing I'm deleting so that if it goes to you, you are not getting confused. Okay. So I'm just deleting this extra thing. I'm just keeping whatever is relevant for your question. These are the basic details, like how many units can be sold in 1 year, 2 year, 3 year, 4 year and onwards, and what at what price and at what
variable cost. We determined the free cash flow of every year, and we came to know about the cash flows. The term of cash flow we determined, and then we went for project evaluation, wherein we use years. These are the years, 10 years data, and these are the cash flows happening in So, different years. Yes, so your voice is breaking. I'm not able to hear you, please. Sir, your voice is breaking so much. My voice, even your voice is breaking. Asha, just hold for a minute. Is my voice proper for everyone or it's cracking? Sir, Yes, it's sir, it is. cracking little. Sir, yes, sir, it is cracking continuously. It is clear, no? No, sir, it is breaking It's break. continuously. Yes, sir. Just hold. I in network. Well, you know, technology has advantages as well as disadvantages. Just give me a minute. Is it better now? Yes, sir. Yes, sir. Right, right. Thanks for the intervention. So we have cash inflows, and I hope the recording must have started. Yeah, recording has started, right? So that you can watch it later as well. So now you will notice that you have cash inflows of different years. Along with those, different present value factors were calculated. You can refer directly from the table. That's allowed, very well allowed, no problem. And when multiplied, we got to know about the present value of the cash inflows, and we determined that there is a positive NPV. Why this was showing? I changed some figure perhaps, right? Which figure was changed so that it came down to this one? Just give me a minute, 1 minute. Why was the 6,22,500? ये पहला ईयर मैंने चेंज किया perhaps. Just wait. First year का data. हाँ, yes. 77,200 is the first year's data. Yeah. Just to show you something, I changed it. Yes, now it's fine. Now it's fine. So we notice that our net present value is 22,532 rupees. यहाँ तक किसी को issue नहीं है. Everybody knows how to compute NPV. Now, you understand that when NPV will be greater than 0, that means we have positive, we will accept the project. And when NPV is less than 0, that is, it is negative, we will reject the project. And when it is 0, we are indifferent. Why are we indifferent? I explained it in the previous class that why are we indifferent? Why are we indifferent? If NPV is 0, why are we indifferent? Because there is no profit, neither loss. ये explanation मैंने नहीं दिया था पिछली क्लास में. This was not the explanation. सर वो जो रिक्वायर्ड रिटर्न था वो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न के इक्वल था, मतलब कि वो ना Absolutely ज्यादा correct. था ना वो Absolutely ज्यादा था ना कम था. सो वी वर इनडिफरेंट कि हमें रिटर्न मिल रहा है बट वो जितना हमें रिक्वायर्ड है और एक्सपेक्टेड है वो सेम है. Right. When expected is lesser than the actual return, when expected return is less, rather मैं इसको ऐसे इस सेंस में कहता हूं, when the return from the project is greater than expected return,
we have positive NPV. So when NPV is positive, definitely we are getting greater return than what we are expecting. When we reject, when it is less than 0, when the NPV is negative, not necessarily it is giving me a negative return. It may give a negative return, but it is not necessarily it is giving a negative return. The only thing is that the return of the project is less than the expected return. And therefore it is giving me a negative return. Project may return at 9% ka or discount rate at 10% ka. So return which is the project is giving back to me is 9% and I am expecting it to be 10%. So definitely the NPV will be negative. This is value maximizing or wealth maximizing. Why it is wealth maximizing? What is expected return? The expectation by the investor. What is the return of the project? ROI, return on investment. Now, if ROI or the return on investment is greater than what you are expecting, what are you expecting? Your opportunity cost. What is that? That if you invest on your own, what you will earn. So if you invest on your own, you will earn this. And if you invest through company, through my project, it will earn this. And the earning of this company will be greater than yours. And therefore, I am maximizing your value. That is why all positive NPV projects, all positive NPV projects are value maximizing or wealth maximizing. So हमारा जो एक discussion था ना wealth maximization versus profit maximization. This is perfectly in line with this discussion. That all positive NPV projects are wealth maximizing. All profit maximizing projects may not be wealth maximizing because of their risk. If there's a greater risk, your expected return may go up, and therefore, ultimately, you may reject it. So all negative NPV projects are value decreasing projects. So now the question is that suppose there is no financial constraint. And there are 4 projects. There are no financial constraints. You can invest any amount. And I want to understand your understanding about the concept till we discussed. Your cash outflow, initial cash outflow is, let's say 1 lakh. Uh, 50,000, 40,000, and 25,000. Now your NPV or present value of cash inflows. So this is present value of cash outflows. The present value of cash inflows is, let's say, 40,000. 20,000. Rather, let's make it 50,000. 20,000. A 150 and 70. And this is 40,000. And this is 23,000. So your NPV is present value of cash inflows minus present value of cash outflows. And mind it, you do not have any restriction of funds. An indefinite amount is available to you, infinite amount is available to you, though that's not a reality. But suppose there is no financial constraint.
and you have to invest. You have to construct a portfolio wherein you have to choose either one or more projects out of these 4 projects. How many projects will you take in your portfolio? Tell me. How many projects will you take in the portfolio? Sir, 2. Sir, 3. Sir, 3. Okay, who said 2? 3. Right. So some people are saying 2, some people are saying 3. Anyone who is saying 2, just give me the reason why 2. And Excuse me, which sir. 2? Yes, please. Sir, I have said 2 because sir, because of sir, positive ना पहले NPV. तो बच्चे ये बताओ 2 मतलब कौन से 2? Sir, A and B. A and B. Okay. Why A and B? Sorry sir, sorry sir, 3 लेंगे A, B and C because मतलब थर्ड में भी हमें सर मतलब इंडिफरेंट है हम, तो वो भी कंसीडर कर सकते हैं हम. Yes. जो third project है, though it is giving a 0 NPV, but when the 0 NPV is when the return of the project is exactly equal to expected return. तो 0 मतलब no return नहीं है. Yes sir, yes sir. 0 means return is there, but that return is actually equal to expected return. मैं ये आपके दिमाग में रखना चाहता हूं. I want to keep it in your mind that you should not only look with plus minus and your 0, because that's a, what I should say, वो जो एक मैकेनिकल वे है लर्न करने का, वो नहीं है. You understand why it is positive and why it is negative and why it is 0. Of course, D I will not choose because D will decrease the value. What is the problem? Am I audible? Yes, sir. Why on hold? Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. You are audible. Yes, sir. Audible. I'm audible now. Yes, sir. You are audible. Bachcho, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. You are Yes, audible. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. हो रहा है? But it is giving me some problem here, over here. Okay. Okay, fine. So I will definitely not invest my amount in project D because it is value decreasing. It is giving me a NPV of minus 2000, which means that my expected return is greater and the project's return is lower. मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, है ना. Suppose you are investing 1 lakh rupee. You are investing 1 lakh सीट नहीं दिख rupee. रही. अच्छा, ओके ओके. मैं सबसे पहले आज अपना वीडियो ऑफ करता हूं बिकॉज डेटा बहुत इशू क्रिएट कर रहा है. 2-3 बार मैं मतलब डिस्कनेक्ट हो चुका हूं. अब शेयर हो रही बेटा? Is it getting shared now? Yes, Yes, sir. sir. Right. So now let's understand that what I'm trying to say about this negative thing, है ना? Suppose in a bank you invested 1 lakh rupee. In a bank you invested 1 lakh rupee for 4 years, or let's say for 2 years. So at the end of year 2,
And the, yes, of course, what is the return? That's important, है ना? So we are expecting that the bank is offering me an interest of, let's say, 5% or 7%. तो अगर बैंक 7% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है मुझे, तो व्हाट विल बी दी फ्यूचर वैल्यू? ये तो आज की वैल्यू है. This is the cash flow today, 1 lakh Yes, sir. rupee. Yes, sir. What will be the value at the end of 2 years? 1,14,000. At the end of 2 years, it will be 1 lakh 14,000. नहीं, 14 से ज्यादा होगा. Sir, 1 lakh compounding. into 1 plus R. What is R? 7%. Raised to the power 2. So this will be 1,14,409. This means we will be investing and with 1 lakh. This means there are two cash flows, C0 and C2. C0 is 1 lakh outflow and C2 is 1,14,490 inflow. This amount of 1 lakh was raised through a loan wherein the interest rate was 10%. So my opportunity cost is 10%. My expected return is 10%. Before I go to my expected return, tell me, I'm investing 1 lakh and I'm getting 1,14,490. Return negative है कि positive है? Tell me whether the return is negative or positive. Sir, negative होगा. Return. Sir, I am positive. asking question. Return. Yes, return is greater than 0. Return is 7%. हमने अभी तो compute किया था. Yes, sir. Yes, sir. Sir, And but if you loan. are, नहीं वो भूल जाओ अभी. Forget about this. This is what you are, what you want. I'm not going to what you want. I'm saying what the project is offering. What the project is offering, is it negative? No. In any case, if the total cash inflow, याद रखो logics पे जाओ. If total cash inflow is greater than total cash outflow, I repeat, if the total cash inflow is greater than total cash outflow, the return cannot be negative. क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है. IRR है ना, IRR cannot be negative here. So the return of the project is 7% here because we computed out of that only. But what will be NPV? Now NPV compute करने के लिए इसको discounting करनी पड़ेगी हमें. And we will have to discount it with what? With our expected return, which is 10. So this is my present value of cash in outflow. What is present value of cash inflow? Present value of cash inflow is 1,14,490 divided by 1.1 plus 10% raised to the power 2. कितना बना? This becomes 94,619. What is NPV? NPV is present value of cash inflows minus present value of cash outflows. यानी इसमें से इसको हम करेंगे minus. What is NPV? Negative. Now Sir, NPV is negative. Does it mean value. that our project was giving a negative? No. Our project was giving a positive return of 7%. That is why 1 lakh rupee became 1,14,000. But our expectation was 10%, which is greater than 7%. Sorry.
आई प्लीज एक्सक्यूज मी, बताइए दोबारा प्लीज। आज मैं ये मेथड्स खत्म करूंगा बिकॉज आई हैव टू टेक यू टू कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। इसीलिए मैं बार बार थियरी पे बिल्ड कर रहा हूं कि आप समझो लॉजिक को, क्योंकि आगे जो भी हम करेंगे सब उस पे चलेगा। हाँ जी सर बच्चे वो बताइए प्लीज, कोई क्वेश्चन था हेलो आपका? हेलो एक्सक्यूज मी सर। आई होप you are able to hear me. Yes, sir. Right. Chalo, let's proceed further. Due to this, technology thing, I will have to ask you this question time and again. Khair. So we understood one thing, that a negative NPV may not necessarily be what? अगर नेगेटिव रिटर्न। Yes. Okay. Let's go to next thing. Let's calculate ROI. और थोड़ा एक और लॉजिक चलते हैं। What is cumulative cash outflow? एक्सक्यूज अगर मी मान सर। लो मैं, हेलो हाँ जी बच्चे, सर, यस जो यस अभी प्लीज। आपने लास्ट पार्ट किया था, आप एक बार उसे अनडू कर सकते हो? हेलो हाँ सर, अभी करिए जो, बच्चे। हाँ जी, और सर इसमें हमने मम्मी मम्मी इसमें वो सर इसमें हमने एक्सपेक्टेड में 10% क्यों, मतलब कि हमने इसे 10% पे क्यों निकाला है? देखो, आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डिटरमिन होती है, और वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि दो ऑप्शंस थे आपके पास और आपने उसमें से एक ऑप्शन को चुना। दूसरा क्या हो सकता है, मोस्ट लाइकली अगर दो ऑप्शन थे तो आप क्या करते? एनीवेज, इफ यू हैव दीज टू ऑप्शंस, तो कोई भी रैशनल पर्सन क्या करेगा, वो सीधे सीधे 10% में इन्वेस्ट करेगा, 7 में जाएगा ही नहीं, राइट? तो इसलिए ये रजिस्ट हो जाता। तो हमने क्या अज्यूम किया कि जो कैश फ्लो ये 1 लाख रुपया आप रेज कर रहे हो, इट इज थ्रू अ सोर्स जहां पे आपको 10% पे करना है। अब जो लोन आपका है, अगर वो 10% पे है, तो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो बी 10% और मोर। इसीलिए हमने कहा भी 10% मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अगर प्रोजेक्ट मेरा 10% या उससे ज्यादा रिटर्न देता है तो मेरा एनपीवी पॉजिटिव होगा, नहीं तो वो एनपीवी नेगेटिव होगा। ओके सपोज सर। ये इंटरेस्ट 12% होता, ये 12% पे इंटरेस्ट होता, तो क्या होता? तब होता 1,25,440। तो ये अमाउंट होता 1,25,440। और आपका एनपीवी कितना होता? +3,669 रुपीज। So if your return is, which is R, if your return is greater than your expected return, आपका एनपीवी हर हाल में पॉजिटिव होगा ही होगा। चलो मैं एक और कॉन्सेप्ट पे जाता, लेकिन अभी मैं छोड़ता हूँ, उसको टाइम खराब होगा थैंक हमारा। यू सर। ओके सर। हाँ, अब मैं आपको एक नई कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूँ, जो है पीआई का। व्हाट इज पीआई? एंड आई एम मतलब वेरी पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग यू, ये जो पीआई है ना, मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मैं इसको मानता हूं कि फेक है, कोई काम वाम है नहीं इसका। क्यों? उसका मैं आपको आज लॉजिक देता हूं मल्टीपल। फॉर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस पीआई इज, आई एम कीपिंग इट ऑन द शीट, तो अगर आपको जरूरत हो पड़े तो आप कर सकते हो। व्हाट इज पीआई? पीआई मींस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो, if given a choice between two methods, I will always go for NPV. But there are certain situations, certain complex situations जहां profitability index काम आता है। What are they? We will understand and we will appreciate. But before that, पहले समझो कि ये profitability index है क्या।
The present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. Present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. So अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है, पीआई कैलकुलेट करना है, तो हाउ विल आई डू? व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज present value of cash inflows 1,50,000 divided by 1 lakh. This means it is going to be what? 1.5. Similarly, I can calculate profitability index for these projects, wherein this is cash inflows, present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. सिंपल तरीका है, कैसे किया हमने इसको? Here also we wrote this 70,000, which is present value of cash inflows, divided by 50,000, which is present value of cash outflows. This is 1.41 and 0.92. What about our own project? ये जो हमने ओरिजिनल प्रोजेक्ट से काम करना शुरू किया था, what is this is your NPV. What about profitability index? The profitability index will be equal to present value of cash inflows. That's it. This is 6,22,532 divided by 6 lakhs. This is your profitability index. Now, profitability index and NPV method will give you same result as long as it is a single project. Profitability index and NPV both will give you the same suggestion about acceptability and rejectability of the project. Why so? Let us understand. Present value of cash inflows, if present value of cash inflows is greater than, if the present value of cash inflow is greater than present value of cash outflow, we have positive NPV. बट अगर रेशियो निकालो तो क्या होगा? Present value of cash inflow is greater than the outflow, the ratio will be greater than 1. So in this situation, the PI will assume a value which is greater than 1. So here also we were saying except. Here also we are saying except. Also. If this relationship is reversed here, that present value of cash inflows is less than the present value of cash outflow, it will lead us to negative NPV. अब यहाँ रेशियो वाइज देखो, न्यूमरेटर इज लो, denominator is more. This means I will see a profitability index which is less than 1. In both cases, we will reject. What about if both are same? If present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow, that leads us to 0 NPV.
That leads us to NPV equal to 0. You are indifferent. Now just assume that if the numerator is same and denominator is same, then only NPV will be 0. क्या कह रहे हैं हम लोग? PBCIF, that is present value of cash inflows are equal to present value of cash outflows. Both are same. So this minus this is 0. So if both are same, the ratio will be 1. So the acceptance rejection criteria is that we should accept a project if the profitability index is greater than 1, reject a project when the profitability index is less than 1, and we are indifferent about the choice if it is equal to 1. Let us see. For all positive NPV projects, we will have our profitability index greater than 1. Look at this positive NPV. What is profitability index? 1.5. Positive NPV 1.4. Zero NPV 1. And negative NPV less than 1. So profitability index and NPV will both give you the same set of suggestion about the acceptability and the rejectability of the project. Same. Then what is the use? The question is, then what is the use? Okay, let me show you the use. ऐसा नहीं कि use नहीं है, but why I say fraud, yeah, why I say useless, because there are other alternatives which can solve my problem, and I'll show you that alternative even today. So these are the projects. इसी के नीचे चलता हूं. So we have 4 projects, A, B, C, D, wherein the cash inflows are following, and the present value of cash inflows are given as following: 1,30,000, 70,000, and this is these spent this 52,000. Now tell me, if I give you a limit that you cannot make a capital expenditure, your capital expenditure in a year should be less than or equal to 1 lakh. That's it. You can invest 1 lakh or less, but you cannot invest more than 1 lakh. That means I have put a cap on your capital expenditure. This is known as capital rationing. This is known as capital rationing. So capital rationing is a situation wherein, so it's a special situation for investment, wherein the maximum amount of investment that can be done in a year is limited by wherein capital expenditure in a year is limited by either by the external forces, because the funds availability is not there, or because of the internal policy of the firm कि इससे ज़्यादा invest करना ही नहीं है. So the reasons can be any, can be internal or external, can be a policy matter, can be a fund scarcity, anything. But हमने ये कहा कि नहीं, 1 लाख से ज्यादा हमें नहीं चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक साल में ज्यादा नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट.
and you computed NPV. So what is NPV? NPV is cash present value of cash inflow minus present value of cash outflow. So इसका 30,000, इनका 20,000, इसका 12,000, तो इसका 2,000 minus 2,000. अब मेरे पास 1 lakh rupee है, that's it, only 1 lakh rupee. Here in this situation, when I was constructing a portfolio, my amount was not limited. I said there is no problem of investment. You can invest whatever amount you want to invest. Here I am saying, no, you cannot do that. You will have a maximum capital expenditure available is 1 lakh per year. You cannot invest more than this much amount in a year. अभी पर ईयर हटाता हूं मैं, अभी जिसको हम बस ये रखते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी. So as per NPV ranking, this ranks 1, this ranks 2, and this ranks 3, and this has to be rejected. In any case, it has to be rejected. अगर रिजेक्ट करने का मन नहीं कर रहा तो इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या करना है उसमें. So this becomes 4th. So if you follow NPV ranking here, you will say that my decision is, now this is decision as per NPV ranking. You will say I will invest in project A with an NPV of 30,000. That's it. यही तो होगा. सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम बी और सी में अपना अमाउंट डाल दें और बचा हुआ डी में डाल दे, तो मतलब उससे हमारा रिटर्न बढ़ जाएगा ना. हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा, ठीक है. अब होल्ड करो, वहीं आ रहा था मैं. Let's talk about profitability index. How will we compute profitability index? Profitability index is present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. And let us check about the profitability index ranking. Profitability index ranking. This says this project is number 1. This project is number 2. मैं इसको number 2 करूंगा. This project is number 2 and this project is number 3. And this project is number 4. Now, what profitability index says that invest in project B and C. How much amount you will invest? You will invest 90,000 here. You will invest 90,000 here, 50 and 40. With the NPV of, कितना NPV होगा इसका? 20,000 and 13,000, 33,000.
and surplus cash of 10,000. So you are investing in project B, you are investing in project C, you are getting an NPV of 33,000, and there is surplus cash of rupees 10,000 available to me. Now the question is, if I have to choose any, I will choose project A. But can I invest 10,000 in project A? उसके लिए कंडीशन है प्रोजेक्ट डिविजिबिलिटी. What is project divisibility? Divisibility means, see, either the project is accept or reject. Either the project is accept or reject. That you either accept a project or you reject a project. You cannot invest in part. If it is that you cannot invest in part, you either accept or reject, then we try to maximize our NPV by making whatever combination is possible that gives me the maximum NPV. The profitability index is useful when a common sense will prevail here that look, these two together is giving me greater NPV as compared to this. So no need to go for the NPV ranking. Let's invest here in these two and have more earning than going for one individual project. But if two conditions are satisfied, that the project is divisible, and there is capital rationing. If the project is divisible and capital rationing is there, I will prefer profitability index over NPV. I will prefer profitability index over NPV. क्या होना चाहिए? Project should be divisible and there should be capital rationing. मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कैसे. सपोज जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट है वो होता है 30,000, बल्कि 13 है ना, 35,000. सेम रैंकिंग में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा प्ले कर रहा हूं इसके साथ, तो प्लीज बियर विद दैट. सपोज ये होता, so what would you do? Now two conditions are there. क्या? Project is divisible and there is a capital rationing. पहले प्रोजेक्ट डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है वो समझो, उसके बाद ये समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. What will be the ranking over here? 1, 2, 3, and now 4. What is divisible project? It means, suppose this project A is divisible. So if this project A is divisible, I'm saying assume this project is divisible, and you have 20,000 rupee to invest. This project is divisible. I'm writing so that you can later on, if you watch, you can understand what I'm trying to say. Suppose that this project is divisible. Divisible means you can invest in part. If it is indivisible, it cannot be divided. Then investment in fractions are not allowed. Either you take the whole project or you reject the project. But if the project is divisible, then if the project is divisible, then now suppose you have capital availability of
let's say 40,000. So this means you will invest here 40%. So you will invest here सर 40,000 of, हाँ जी बच्चे, सर एक डाउट था, लाइक जैसे अभी आपने बताया था कि एनपीवी को हमेशा हम प्रेफरेंस देते हैं कि अगर कुछ भी होगा तो हम एनपीवी को बेस्ट मान के करते हैं। तो अगर हम इस आपका ऊपर वाले प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें तो पीआई ज्यादा बेटर आंसर दे रहा है, तो हम पीआई को क्यों नहीं प्रेफरेंस देते? मैं वही तो कंडीशन बता रहा हूँ बच्चे कि हम पीआई को प्रेफरेंस कब देंगे। पीआई को प्रेफरेंस देंगे अगर ये दो चीजें सेटिस्फाइड होंगी तो। नंबर 1, प्रोजेक्ट इज डिविजिबल, एंड नंबर 2, देयर इज कैपिटल राशनिंग। अगर कैपिटल राशनिंग नहीं है, अगर पैसे की शॉर्टेज नहीं है, तो फिर मुझे एनपीवी तो मैक्सिमाइज करना है और इसमें भी एनपीवी मैक्सिमाइज करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Even if you are choosing PI ranking, you are trying to maximize your NPV. हाँ, कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफर होगा उसकी रैंकिंग का इशू है बस, नथिंग एल्स। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज सेम, एनपीवी हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, सो योर प्रोजेक्ट शुड बी डिविजिबल एंड कैपिटल राशनिंग इज देयर। कैपिटल राशनिंग नहीं है तो क्या करोगे फिर? पैसे की कमी नहीं है, देयर इज नो शॉर्टेज, देन टेक ऑल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स, there is no limitation of money. नहीं भी हो सर, शॉर्टेज नहीं भी हो तब भी तो हमारा उससे एनपीवी ज्यादा आ रहा है, मतलब। हाँ तो एनपीवी तो कंपेयर कर रहे हो ना बच्चे, यहाँ पे आप एनपीवी तो कंपेयर एक्सक्यूज कर मी रहे हो ना। हाँ जी प्लीज। सर, हमारे पास अगर 1 लाख ही है और हम लोग जैसे कि खाली एनपीवी कंसिडर कर रहे हैं, तो सर हम लोग अगर देखा जाए तो बी और सी प्रोजेक्ट में बी हमें बहुत गेन हो रहा है, बल्कि 10,000 और बच ही जा रहे हैं सर। तो हम हाँ लोग फिर एनपीवी से ये कैसे पता करेंगे कि ऐसा करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट, क्योंकि बी और सी तो एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है ना, उसमें तो हाँ डिविजिबिलिटी की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। तो सर हम लोग उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे फिर? अगर ऐसा देखा जाए खाली एनपीवी की, फिर तो एनपीवी के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ ए ही बोलेंगे, पर अगर मतलब रैशनली देखा जाए तो बी एंड सी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। राइट यस सर, ये मेरा भी डाउट है कि राइट, हमें तो फिर लेट्स, रैशनल देख के ही करना है ना। यस, नाउ लेट्स keep the things in a perspective. We are discussing here the conflict between NPV and PI. जरा एक सेकंड मुझे दो ताकि मैं पावर चार्जर पावर कनेक्ट कर दूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट, सो आई होप आई एम ऑडिबल ना। और देखो आप पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ठीक है। वी आर कंपेयरिंग हियर एनपीवी वर्सेस आईआरआर रैंकिंग, पर कर क्यों रहे हैं ये भी तो हो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनपीवी वर्सेस पीआई, नो नॉट आईआरआर, पीआई, एनपीवी वर्सेस पीआई। Please mind one thing which I told you here, that profitability index and NPV are not two different things. They are they both try to achieve the same, maximize the wealth, but their approach is different. Now, if you have different cash outlay, the size of investment is different. Because NPV is a absolute method, it may be a bit misleading. And if you are making a computer generated program there, you may have a problem if you're working just on a ranking basis. Ultimate objective क्या है? Ultimate objective is we have to maximize our wealth. Profitability index and NPV both try to achieve the same. So whether or ranking or not, even if this much area is hidden, it's not there with you,
Any common rational person will forget that this area is not there. Any common rational person will look at, okay, if I invest here 1 lakh, I will be having 30,000 NPV. If I invest 90,000, I will have 33,000 NPV. Okay, fine, let's have it. Let's have it. यही दो ले लेते, बाकी नहीं लेते. Fine. That is what I'm saying. The ultimate objective is to go. सर हमारा प्रोजेक्ट. Hold on, बच्चे, hold on. I have got your question, and I will come to the answer. 1 minute रुको अभी, है ना? Now, I'm trying to invest, and I'm making 33,000 rupees of NPV by investing 90,000. That's just a plus है. What should I do with this? So I am trying to look for कि अब मैं इसमें इन्वेस्ट करूं कि इसमें इन्वेस्ट करूं. Where should I invest? For that there has to be a condition. क्योंकि देखो, ना तो इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं ना इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं. मेरे पास 10,000 रुपए हैं सिर्फ. So neither I can buy this complete or nor I can buy this complete. I just have 10,000 rupees. But the question is, if the project is even divisible, divisible मतलब क्या कि पार्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट अलाउड है, तो कौन से वाले को चूज कर? शुड आई चूज प्रोजेक्ट ए और शुड आई चूज प्रोजेक्ट बी? इसका मतलब, शुड आई इन्वेस्ट हियर 10,000 रुपी, द रिमेनिंग 10,000 रुपी, और आई शुड हियर द रिमेनिंग 10,000 रुपी? इस सवाल का जवाब कौन देगा? वो एनपीवी नहीं देगा सही, बिकॉज एनपीवी विल से ये ज्यादा एनपीवी है, यहां इन्वेस्टमेंट करो. लेकिन एनपीवी इज नॉट कंसीडरिंग द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट. पीआई रैंकिंग्स ऑन द अदर हैंड डू कंसीडर. अब इसी केस में ले लो कि आपका एनपीवी कहता है ये दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो पहले, फुल कंप्लीट. ओके, लेट्स टेक इट. कितना हो जाएगा? 33,000 प्लस कितना बच गया? हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट? 10,000 अमाउंट इज लेफ्ट. हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट? 10,000 रुपी इज लेफ्ट. एंड दैट 10,000 रुपीज शुड बी इन्वेस्टेड. किसमें इन्वेस्टमेंट करूं मैं? प्रोजेक्ट ए में या डी में? डी में होगा. डी में क्यों होगा? क्योंकि अगर हम लोग डिविजिबिलिटी करेंगे 25,000 में 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो वो रैंक पीआई के हिसाब से तो ज्यादा आएगा ना. तो आप तो पीआई पे जा रहे हो ना, मैं तो पीआई की बात ही नहीं कर रहा. मैं क्या कह रहा हूं? एनपीवी पीआई है ही नहीं. फॉरगेट अबाउट दिस. ये लास्ट के 3 जो ये कलर्ड कॉलम है, इनको छोड़ दो. आप सिर्फ इन 3 कॉलम को देख के बताओ कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मुझे. ए में, यहाँ के हिसाब से. हाँ, ये छोड़ दो, ये 3 कॉलम छोड़ दो बिल्कुल भी. नॉट टू बी कंसीडर्ड एट ऑल. ए में करना चाहिए. चलो, ए में कितना करना चाहिए? 10,000 रुपी. कितने में से? 1 लाख में से. तो अगर 1 लाख में 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो एनपीवी भी उतना ही मिलेगा, उसी प्रोपोर्शन में. तो एनपीवी मिलेगा उसका 10%. कितना हो गया? 36,000. आप कहते हो एनपीवी मैक्सिमाइज कर रहा हूं मैं, मेरा एनपीवी 36,000 आ रहा है. अब मैं उस जेंटलमैन की बात पे चलता हूं जो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम डी में इन्वेस्ट करेंगे. ओके, वो करके देखते हैं क्या होगा. अगर डी में इन्वेस्ट करोगे तो ये 10,000 रुपी किसमें इन्वेस्ट करना है मुझे? प्रोजेक्ट इज डिविजिबल, सो आई हैव टू इन्वेस्ट इट हियर इन 25,000 रुपी, यानी 40% इन्वेस्टमेंट. तो कितना रिटर्न आएगा? 9,000 का 40%, 36,600. अरे एनपीवी तो बढ़ गया. वेरी ट्रू. अब मैं तीसरे एनपीवी पे चलता हूं. I am purely not looking at all here. I am straight away going to this NPV rank, this ranking, PI ranking. ये क्या कहता है? Take project B in full.
क्योंकि इसकी रैंकिंग है 1। PI इज रिलेटिव रैंकिंग, इसमें रिटर्न है 40% का। देन टेक प्रोजेक्ट डी इन फुल, क्योंकि इसमें रिटर्न है 36% का इन द टर्म्स ऑफ एनपीवी, एंड देन इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट सी। अब देखो ऑर्डर चेंज कर दिया, तब एनपीवी क्या होगा, लेट्स चेक। अब एनपीवी क्या होगा भाई, because I am investing full amount of 50,000 in project B, I will be getting 20,000 as NPV plus second ranking says invest in project D, which will give me 9,000 of। अब ये तो आपने सोचा नहीं होगा 9,000 वाले में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि सबसे कम इसी में है इन्वेस्ट एनपीवी, बट आई विल हैव कंप्लीट बिकॉज मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड, 75,000 has been invested, 50,000 in B and 25,000 in D। अब बचा कितना, 25,000। कौन से वाले में इन्वेस्ट करूं मैं, तो रैंकिंग में थर्ड नंबर पे आता है प्रोजेक्ट सी। तो रिमेनिंग 25,000 आई विल इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, यानी 25,000 की इन्वेस्टमेंट करूंगा आउट ऑफ 40,000। तो उसी प्रोपोर्शन में मुझे मिलेगा एनपीवी। कितना एनपीवी है, 13,000। नाउ द अमाउंट इज 37,125। अब बताओ एनपीवी वाली रैंकिंग बेहतर है या पीआई की रैंकिंग बेहतर है? अल्टीमेटली बोथ आर मैक्सिमाइजिंग द एनपीवी, अल्टीमेटली बोथ आर मैक्सिमाइजिंग द एनपीवी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वही है, वी हैव टू मैक्सिमाइज एनपीवी। बट which ranking is better, NPV ranking or PI ranking? Sir, PI ranking. This is what I wanted to tell you there. I hope अब कोई query नहीं होगी, अब confusion दूर हो गया होगा। Yes, sir. हाँ जी, anyone? I hope now there should be no doubt and your question must have been answered, that we are ultimately trying to maximize NPV, but we are how to choose a project to invest in. So if these two conditions are there, that there is a capital rationing and their projects are divisible, we should prefer over NPV to PI. PI should be preferred over NPV. लेकिन तब क्या होगा जब मल्टी ईयर प्रोजेक्ट हो, तब क्या होगा? PI की यूसेज बहुत लिमिटेड है और इसका ऑल्टरनेट भी अवेलेबल है, एंड दैट इज व्हाई मैं हमेशा कहता हूं कि ये यूजलेस है। मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं। राइट, ये सब हटाता हूं मैं बिकॉज these are not required, you have already understood it fully. Now let's go to the next case. Case क्या है? There are 3 projects A, B, C, so these are the projects. C0, that is initial cash outflow, cash flow in 1, 2 and 3. So it's a 3-year project where the required rate of return is 10%. The expected rate of return is 10%. 50,000 here, 25,000 here, and 25,000 here. So if you take this project, you will have to invest. This is cash outflow, right? Rest are cash inflows. So this is project A, project B, project C with these cash outlays. मैं नेगेटिव ही कर देता हूं।
ताकि आपको पता चल जाए। नहीं, आउटफ्लो लिख दे तो नहीं हो सकता नेगेटिव, सॉरी, ऊपर लिख दे आउटफ्लो तो फिर आउटफ्लो ही है ना, राइट। व्हाट आर द इनफ्लोज? 30, 25, 20, 30, 25 and 20. The figures are in 1000. 10, 20, 10. And third वाले प्रोजेक्ट का है 10, 15, 15. What will be the present value of cash inflows? What will be the present value of cash inflows? मैं बस थोड़े से अपने आप को अपने जस्ट कन्वीनियंस के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कुछ यहां पे डिस्काउंट फैक्टर्स लिख रहा हूं, ठीक है ना। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 का 10% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%। ईयर 1 का just a minute, it is held, right. So आपको याद भी होगा in any case 0.909, 0.826 and 0.751. तो क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी कैश इनफ्लो 1 multiplied by cash present value factor plus cash inflow 2 multiplied by present value factor plus cash inflow 3 multiplied by present value factor 3. सिंपल, ऐसे निकालते हैं ना हम लोग प्रेजेंट वैल्यू। So the present value of this cash flow turns out to be 12.94 and इनका आता है 33.12 and 33.745. This is how we people compute the present values. क्या करते थे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए? आप टेबल बनाते थे ना। वो टेबल कैसे होता था? यहां लिखोगे 30, then 25 and then कितना 20 और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 0.909, 0.826 एंड 0.751। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ दिस इनटू दिस, और इनको आप नीचे ले जाओगे और तीनों को सम कर दोगे तो यू विल हैव योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। द सेम थिंग आई एम डूइंग हियर and same value I am getting over here. क्या होता है, आपको एक कॉलम में काम करने की आदत होती है तो यू विजुअलाइज इज बेटर, और रो में काम करने की आदत नहीं होती तो यू डू नॉट विजुअलाइज दैट बेटर। तो इसीलिए मैंने फॉर एग्जांपल आपको दे दिया। और आज की क्लास में कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा है। अभी थोड़ी देर में मैं मैकेनिक्स पे भी आ रहा हूँ, लेकिन फोकस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि क्लासेस का नंबर बहुत कम है, तो मैं चाहता हूं कम से कम कैपिटल बस्टिंग अच्छे से हो जाए, रिस्क एनालिसिस, और जो एक नया चैप्टर है आपके लिए, क्या नाम है उसका, मर्जर एंड एक्विजिशन, जिसपे क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, वो भी थोड़ा अच्छे से हो जाए। बट मर्जर एक्विजिशन में ही दो क्लास लग जाती है, तो आई एम ट्राइंग की, और रिस्क एनालिसिस में भी 2 क्लास लग जाती है। जनरली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस कैपिटल बस्टिंग वाले से, पर टाइम बहुत लगता है बिकॉज इट इज वेरी लार्ज चैप्टर। तो मैं थोड़ा उस पे लॉजिक पे ही जा रहा हूँ, बट इसके बाद फिर मैं आपको ले चलता हूँ वापस मैकेनिक्स पे कि आपको एरर कैसे कंप्यूट करना है एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट। व्हाट इज एनपीवी? तो अगर मुझे एनपीवी कंप्यूट करना हो तो दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज।
तो 12.94 एनपीवी है इसका, 8.12 एनपीवी है इसका, और 7.75 एनपीवी है इसका। एंड देयर इज अ कैश कैपिटल राशनिंग है, देयर इज अ कैपिटल बजट, and that capital budget is 50,000 per year. All figures here are in thousand. अब मुझे बताओ which project would you like to take? Which project would you like to take? सर प्रोजेक्ट ए। Project A. क्यों? सर BNC। BNC. That is the problem with NPV. If you take the ranking as per PI, it always is better. सर वो अभी पीआई नहीं था ना, इसलिए मैंने बोला कि ए। हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हो, पर प्रॉब्लम यही है कि अगर आप पीआई नहीं देखोगे तो क्या होगा, एनपीवी में मिसलीड यू, इट में मिसलीड यू। सो व्हाट इज पीआई? Profitable cash, present value of cash inflow divided by present value of cash outflow, 1.258। सर हाँ सर बट अगर पीआई नहीं भी होगा तब भी तो हम हाँ। इससे एनपीवी चेक कर सकते हैं कि जैसे हमने देखा बी और सी को लिया तो वो तो हाँ। विदाउट पीआई भी हो जाएगा चेक एनपीवी के बेसिस पे। तो ग्रेटर देन ए आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई जरूरत नहीं है पीआई उसको देखने की, बट वो कंफ्यूजन हो जाता है ना कई बार, क्योंकि एब्सोल्यूट अमाउंट है, कंपैरिजन आसान है, और सर यहाँ बट पर यू आर वेरी राइट, डिविजिबिलिटी। जरूरी नहीं है। हाँ, सर डिविजिबिलिटी इज अ क्वेश्चन, अभी मैं प्रोजेक्ट डिविजिबिलिटी पे नहीं जा रहा। अगर प्रोजेक्ट सर लेकिन डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी की तो तो पीआई यूज जरूरत करोगे है तुम। ही। सर डिविजिबिलिटी तो यहाँ पे हुआ ही नहीं ना, लाइक हमें प्रोजेक्ट को बस हमने दो फुली तो लिए हैं, कोई हमने उसका अमाउंट बचा हुआ तो किसी और में इन्वेस्ट करा ही नहीं है, तो फुल तो देखिए हम आप, एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। ठीक कह रहे हो, मैंने इसीलिए इसको ऐसे बनाया, तो इसको मैंने नहीं बनाई, बुक का क्वेश्चन है किसी, बट मैंने इस क्वेश्चन को जो लिया है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, बट जब मैं लॉजिक समझाऊंगा तो मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं समझाऊंगा ना, मैं इन जनरल कह रहा हूँ ना कि देयर मे बी रिक्वायरमेंट ऑफ, अब मान लो यही 30,000 होता, तब ये 20,000 होता, 22,000 होता, तब क्या होता? अब तो प्रोजेक्ट डिविजिबिलिटी की बात आ गई ना, तो आप तो क्वेश्चन सर स्पेसिफिक कह अगर रहे हो। प्रोजेक्ट डिविजिबिलिटी हाँ क्वेश्चन स्पेसिफिक अगर हम करके देखें तो फिर हमारा एनपीवी के अकॉर्डिंग हो सकता है, वरना फिर पीआई लेंगे। हाँ, तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन स्पेसिफिक, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल कि इफ देयर इज अ कैपिटल बजटिंग एंड द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, in that case PI should be preferred over NPV. Got it? Projects are divisible ओके सर। and capital budgeting is there. चलो okay, next going back, capital budgeting नहीं, capital rationing is there. Budgeting मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया, budgeting तो हम कर ही रहे हैं, capital rationing is there. Okay, now so you are saying that according to PI I should go for this, I should go for this, and you know, okay. अब मैं एक इसमें और इशू इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज प्रोजेक्ट डी। दिस इज नोन एज मल्टी पीरियड इन्वेस्टमेंट। मल्टी पीरियड इन्वेस्टमेंट, अभी तक हम क्या मान रहे थे, इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज करनी है, बस आज इन्वेस्टमेंट की, काम खत्म। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टी पीरियड इन्वेस्टमेंट, बट यहां पे मल्टी पीरियड इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब यहां तो कुछ होगा नहीं, यहां तो कुछ होगा नहीं। इन्वेस्टमेंट कब होगा? एक साल बाद। हाउ मच? 80,000 इज रिक्वायर्ड। How much it will give? It will give me 60,000 at the end of year 2 and 40,000 at the end of year, sorry, 3, हाँ 3, right. अच्छा,
आप लोग मुझे बताओ इसका एनपीवी कितना होगा। प्रोजेक्ट डी का एनपीवी कैलकुलेट करके दिखाओ प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट डी। सर वो -80 है। एंड आई विल वेट अनलेस करेक्ट। सॉरी, हाँ -80 है। कैश आउटफ्लो है ना, कैश आउटफ्लो इज ऑलवेज नेगेटिव, कैश इनफ्लो इज ऑलवेज पॉजिटिव. So why I did not put a negative sign here? Because at the top of it I wrote it's a cash outflow. सर And because I आपने wrote कैश it's cash आउट सर आपने कैश आउटफ्लो में 0 लिखा है और कैश इनफ्लो में बेटा वो -80। आज का अच्छा आज का ओके कैश आउटफ्लो 0 है, क्योंकि आज तो ये प्रोजेक्ट अवेलेबल ही नहीं है। ये ओके प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा 1 साल बाद, और तब मुझे चाहिए होगा 80,000 रुपी। ओके आई गॉट इट। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और मैं थोड़ा लंबा खींचूंगा इस क्लास को, शायद सवा तक खींचूंगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हमारी दूसरी क्लास भी होती है। अच्छा, दूसरी क्लास होती है आज संडे को? यस सर, 11:15 से सर। अच्छा ठीक है, फिर मैं थोड़ा जल्दी छोड़ने की कोशिश करूँ। कोई नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। और जल्दी बताओ फिर एनपीवी, जल्दी बताओ सो दैट आई कैन प्रोसीड। मुझे बहुत कुछ कराना है अभी। सर 6.88 6.88 सर पीवीसीआईएफ आ रहा है। आप पीवीसीआईएफ आ रहा है? यस सर। सर एनपीवी 6.88 यस, एनपीवी 6.88। यस सॉरी सर, एमपीवी 6.8। Right. So now this project D will have an NPV of 6.88. Okay. So what is the profitability index? Inflow divided by 80, which is present value of cash outflow. So this is 1.086. हाँ जी, अब बताइए इस सिनेरियो में आप क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे? प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करोगे या प्रोजेक्ट बी और सी में इन्वेस्टमेंट करोगे? बताइए। In this scenario, what will be the present value of cash inflow? Here is 86.88. Yes, please tell me, what will be your decision here? You should invest today in project A or project B and C. सर बताओ बताओ हम प्लीज। अगर हम अभी ए में करें और नेक्स्ट ईयर डी में करें तो कर सकते हैं, वही तो पूछ रहा हूं आपसे, करना क्या है कि आज मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूं, बी और सी में इन्वेस्टमेंट करूं या प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करूं? आज The ए में total कर ले। scenario is with you. सर आज ए में करते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर डी में कर लेंगे। उससे क्या होगा? सर उससे ये हमारा एनपीवी उसका ए का ग्रेटर था और नेक्स्ट ईयर मतलब कैपिटल राशनिंग तो इसी ईयर के लिए ना इन्वेस्टमेंट पे। नहीं, दोनों साल के लिए। कैपिटल अच्छा सर, राशनिंग इज 50 पर ईयर। सर फिर तो नहीं हो सकता, फिर नहीं पता। हाँ जी बच्चों, प्लीज बताइए क्या करोगे? सर बीएनसी में करेंगे। बीएनसी में करेंगे। अच्छा, तो आपने कहा कि वी विल हैव बी एंड सी, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? यस सर। तो हाउ मच इज कैश आउटफ्लो? 50,000. What is cash inflow here? 20,000.
What is cash inflow here? 35,000. What is cash inflow here? 25,000. What is the NPV? NPV is 15.865. Yes, sir. 15.865,000. मैं गलत तो नहीं कह रहा? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रोजेक्ट डी है हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Yes, sir, हम कर सकते हैं सर, नहीं, क्योंकि करना इसमें चाहिए या हमारे नहीं पास कर सकते हैं, एक अलग इशू है, करें या ना करें? करें या ना करें? सर एनपीवी तो उसका करना चाहिए। पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट तो करेंगे। चलो गुड, एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर मैंने प्रोजेक्ट बी एंड सी को बाय कर लिया तो क्या मैं प्रोजेक्ट डी ले सकता हूं? Yes, sir. नहीं सर, नहीं ले सकते। नहीं कर सकते सर। अभी बेटा किसी ने यस सर कहा था, क्या नाम है आपका? Sir, हरीश। हरीश। हरीश आप ये बताओ कि अगर मैंने प्रोजेक्ट बी और सी ले लिया तो प्रोजेक्ट डी में कैसे ले पाऊंगा? सर क्योंकि उसमें कैश आउटफ्लो तो है नहीं ना, और क्यों? कैपिटल राशनिंग 80,000 हमारी क्या? 50 और ये 80,000 क्या है? -80,000 है। अच्छा, माइनस 80,000 का मतलब क्या होता है? अगर नेगेटिव कैश फ्लो नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब होता है? Outflow. Outflow. That means I would need 80,000 rupee here as outflow. बजट कितना है? सर बट वो तो नेक्स्ट ईयर का है ना, तो कैपिटल रैशनिंग जैसे अभी आपने बोला पर ईयर के हिसाब से है, तो हम नेक्स्ट ईयर नहीं कर सकते उसमें इन्वेस्ट। ना मैं बता रहा हूँ ना, व्हाट इज द बजट? 50,000 here, 50,000 here. ओके, ओके। Budget is 80 का है, 50,000 per year. There is a वो rationing. 80,000 है। I cannot invest more than 50,000. यस अच्छा, सर। because you invested in first year in project B and C, first year का quota तो exhaust हो गया. यस सर। Agreed. And this will give me cash inflow of 20,000. तो 20,000 ये और 50,000 ये दोनों मिला के एट द एंड ऑफ 70 ईयर 1 मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है? 70। 7 एंड 70,000 इज लेस देन 80,000. यस सर। तो मैं ये इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट और नॉट? यस सर। राइट. व्हाट इफ अगर मैं प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करता तो? What if I would have accepted project A? सर अगर आप ए को एक्सेप्ट करते तो नेक्स्ट ईयर हम ले सकते थे डी को भी। राइट. तो अगर मैं प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करूं आज, तो what is the loss? Loss is that I will not be getting NPV equal to 15.865. यस सर। यही है ना? यस सर। तो ये दोनों प्रोजेक्ट तो मैं ले नहीं सकता because I'm taking A. So I will be getting 12.94 as NPV. But then I can take this project D, which can give me an NPV of 6.88. So now I'm saying take project A. अगर मैं प्रोजेक्ट A लेता हूं तो I can take A plus D. First year how much I need? 50,000. Budget में 50,000 है, no problem. Second year I will have how much amount? 50,000 of budget और 30,000 is का cash inflow. So I will have 80,000. How much cash flow I need? 80,000. तो अब मैं इसको buy कर सकता हूं because I have the money. Right. What is the total NPV? Total NPV is 12.94 plus 6.88. 19.82. तो अगर आज मैं B and C सेलेक्ट करता हूं तो I will make an NPV of 15.86 because I will not be able to take project D. Excuse me, sir. I have a And doubt. if एक minute, and if I take this project A, then I can take this project D later. So this project will give me 12.94, this project will give me 6.88, and ultimately I will be left with 19.82. सर हाँ बताइए. सर अगर हमने
थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट करा होता, मतलब हमें सब C2 कैश फ्लो जब सेकंड ईयर में मिल रहा है तो 20 और 15 मिल रहा है बी और सी पे। तो अगर आप उसमें ऐसे 50 प्लस करते और फिर डी में इन्वेस्ट कर लेते हम तो। नहीं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कब अवेलेबल है? फर्स्ट ईयर में अवेलेबल है। ओके सर, हाँ जी। अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता जो सेकंड ईयर में अवेलेबल होता तो उसको भी कंसीडर करके देखते क्या होगा। अब मैं अपनी लॉजिक पे आ रहा हूं यहाँ पे, राइट। अब देखो क्या इश्यू है। अभी तक हम सर ये मान एक के बात, चल रहे हैं देयर इज नो प्रोजेक्ट डिविजिबिलिटी। व्हाट इफ द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल? तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी छोटी सी चीज में तो हम कंफ्यूज हो गए। नाउ देयर कैन बी 20 इयर्स और हर साल में इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल अवेलेबल होगा। एवरी ईयर देयर विल बी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। तो मल्टी पीरियड सर एक इन्वेस्टमेंट। बार ये आप 86.88 भी बता दीजिए कैसे आया सर। ये हमने 60 को 1 ईयर का करा है और 40 को भी 2 ईयर का। नहीं, ये 80,000 रुपी 1 ईयर, ओके ओके 80,000 सर को एक 1 डाउट, ईयर से करो, इसको करो 2 इयर्स के साथ और इसको करो 3 इयर्स के साथ। ओके ठीक है, सर। तो ये 86.88। हाँ ये रहने। हाँ जी बताइए क्या कह रहे हो आप? सर जो जैसे कि हम लोग ने 1A+D लिया जब, तो जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट ईयर में 50 किया, फिर हम लोग का कैश आउटफ्लो था C1 C2, ठीक है, वो तो ठीक है। सर हम लोग ने जैसे कि सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकाले C1 से, सर तो ऊपर वाले में तो हमने ये कंसिडर किया था ना एनपीवी निकालते वक्त कि शायद मतलब वापस से डिप्लॉय होगा तब जाके शायद इतना एनपीवी आएगा। अच्छा तो ठीक। इसमें तो व्हाट्स अ गुड नेम? आउटपुट व्हाट्स अ गुड नेम? पूजा। पूजा। पूजा इतना डर के मत बोलो, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करने वाला। मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि मैं किन बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, बट यस यही चीज है जिस पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि आप लॉजिक को समझो। ये प्लीज कहीं से पीछे से डिस्टरबेंस है, बंद कर दीजिए माइक। हाँ जी। दिस 30,000 इज री इन्वेस्टेड एट 10%। तभी तो आया ना 62.94। दिस 30,000 हाँ इज वही री सर। इन्वेस्टेड इन 10%, तभी आया 62.94 और तभी एनपीवी 12.94 आया। अच्छा ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? जो भी तो 10% एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। तो चाहे इस 30,000 को किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगाओ या इसमें लगाओ, 10% तो दोनों से आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें लगाने में? ठीक है सर, डबल काउंटिंग नहीं हुई सर। डबल काउंटिंग क्यों हुई? इसके 30, ये जो 30% है, ये जो 10% अर्न करेगा वो इस प्रोजेक्ट से अर्न करेगा कि कौन से प्रोजेक्ट से अर्न करेगा मुझे क्या पता। ठीक है मान सर। लो इसको मैं कहीं किसी शेयर में लगा देता, वहां से रिटर्न कमा के ला रहा होता। डबल अकाउंटिंग क्या है? ये अर्न करेगा तभी तो काउंट होगा। दिस 30,000 विल अर्न मनी देन ओनली इट विल बी काउंटेड। और इस 30,000 को मान लो 10% पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कहीं, और फिर 10% पे फंड रेज कर रहा हूं इस 80,000 को फाइनेंस करने का, तो फिर फायदा क्या हुआ? सेम ही तो बात हो गई। ओके राइट सर। नाउ सर सो एक बारी वी आप अंडरस्टूड 80, दैट। सर वी एक बारी अंडरस्टूड दैट। हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो? सर एक बार 86.88 कैसे आए ये और बता। बेटा 86.88 ऐसे आया कि व्हाट इज एनपीवी? एनपीवी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब एनपीवी 6.88 है, आउटफ्लो 80 है, तो इस इक्वेशन में पुट कर लो। वो क्योंकि ओके सर। ईयर्स डिफरेंट है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ओके सर। पर मुझे पीआई कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू चाहिए, वरना पीआई कैलकुलेट हो नहीं सकता। गॉट इट? सर सर ये एनपीवी आ गया था, वो मैं ऐड कर 86.88, रही थी। हाँ सर ये मैं उसको ऐड कर रही 86.88 थी। कैसे आ रहा है ये नहीं समझ आ रहा है अरे यही तो कह सर। रहा हूँ एनपीवी बहुत। तो ठीक है माइनस। नहीं नहीं बेटा ये बताओ एनपीवी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब आउटफ्लो की फिगर मुझे नोन है, एनपीवी हमने पहले ही कंप्यूट कर लिया है 6.88। तो व्हाट विल बी द नॉमिनल फिगर ऑफ इनफ्लो? वो क्या फिगर वैल्यू होगी? 86.88। सर फिर ये एनपीवी कैसे आया 6.88? और वो कैसे कैलकुलेट किया था? आप ही लोगों ने तो बताया था मुझे 86.88। हाँ सर वो तो आ सर गया ये था आ इनपी। नहीं रहा। सर आप क्यों एक नहीं आ बार रहा? बता दो कैसे आया।
this cash flow multiplied by present value factor plus this cash flow multiplied by the present value factor plus this cash flow multiplied by the present value factor. 6.88. What is NPV? Present value of cash inflow minus present value of cash outflow. Okay, sir. Now, अब इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करके आगे चलता हूँ. इसका मतलब complications will keep on increasing if multiple years are introduced and the projects become divisible. अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल है तो आप याद करो मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने लीनियर प्रोग्रामिंग का, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग पे. सो लीनियर प्रोग्रामिंग इन कैपिटल बस्टिंग प्रोजेक्ट, इफ द कंडीशंस वही है, देयर इज अ कंस्ट्रेंट. लीनियर प्रोग्रामिंग इज बेसिकली फॉर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन or constraint optimization. So if there are constraints which you want to optimize, there are constraints which you want to optimize, constraint optimization, not optimize. What we do, we use linear programming. अब constraint तो है यहाँ पे. What is constraint? Constraint is I cannot invest more than 50,000 in any year. And what I want to optimize? I want to optimize कि मेरा NPV मैक्सिमम हो जाए. तो कैसे करेंगे हम इक्वेशन बनाएंगे. व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? इसमें दो चीजें होती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा कंस्ट्रेंट. और ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा और बीकॉम में भी पढ़ा होगा. कोई है जिसने लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा बीकॉम में? Most of you must have done BCom honors and business mathematics में linear programming आपने किया होगा, simplex table and all, है ना? हमें वो solve नहीं करना, we don't have to solve. In our syllabus it is just कि हमें उसको solution आता है कंप्यूटर के थ्रू, और कंप्यूटर में यूज नहीं करना यहाँ. तो ultimately we just have to formulate it. So we will give the objective function. What is objective function? Maximize NPV. What is NPV maximization? मान लो हमने इस प्रोजेक्ट ए को दिया x1 नाम, इसको दिया x2, या ABC रख देते हैं, नो प्रॉब्लम. तो क्या होगा? 12.94 into A. So whatever proportion you invest in project A is this A. What is A? A is fraction invested, या x से आपको आदत होगी तो let me write x. The proportion invested here is x1. The proportion invested here is x2. It is x3. And here it is x4. Right. So what is objective? Objective is maximize NPV, which is equal to, अगर मैं इसमें 100% इन्वेस्टमेंट करूंगा तो this x will be 1 and what my NPV will be 12.94. So 12.94 into x1 प्लस, और अगर फ्रैक्शन मान लो 20%, 30%, 90% करूंगा तो उसी फ्रैक्शन में आ जाएगा. 8.12 into x2 plus 7.745 into x3 plus 6.88 into x4. This is my objective. अब मुझे नहीं पता किसमें कितने परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करनी है. The computer will tell me in which project I should invest 100% and in which project I should invest a fraction. लेकिन ये तो मेरा maximization, I want to maximize it. Then it is subject to what? Then subject to what? So subject to means constraint.
मैंने देखा है मल्टीपल टाइम्स एक क्वेश्चन पूछते हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग पे, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सेम क्वेश्चन हर बार रिपीट होता रहा है। 10 ईयर उठा के देखना, उसमें कम से कम 10 में से 6 बार 4 बार आया होगा क्वेश्चन, 4 बार तो आया ही होगा सेम क्वेश्चन। वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा आपको। दैट इज इंटीजर प्रोग्रामिंग। क्या डिफरेंस था लीनियर प्रोग्रामिंग और इंटीजर प्रोग्रामिंग में? हियर फ्रैक्शंस आर अलाउड, वहां फ्रैक्शंस अलाउड नहीं है। आइदर यू टेक और यू रिजेक्ट। तो अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है, you can invest in fractions, then only linear programming is available to you. Otherwise go for integer programming. Integer means no fractions, so either you accept it or you reject it. So what are the constraints? The constraints are, there are two constraints by the way, क्योंकि 2 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है, तो 2 constraints हमारे पास। पहला constraint क्या है? These cash flows, ये कैश फ्लो है ना, दिस इज कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो, एंड दीज आर कैश आउटफ्लोज। प्लीज माइंड इट, these are cash outflows, and total cash outflow in year 1 should be less than or equal to 50. That is the budget. So subject to what? 50x1 plus 25x2 plus 25x2 x3 प्लस 0x4, क्योंकि इस साल 0 इन्वेस्टमेंट है x4 में, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट इन ईयर 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। दैट इज द कंस्ट्रेंट। सेकेंड ईयर में आ जाओ। अब सेकेंड ईयर में ये देखो, ये कैश इनफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है, और ये कैश आउटफ्लो है। और ये जो कंस्ट्रेंट है बजट का, वो भी कैश आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो अगर पॉजिटिव है तो इनफ्लो नेगेटिव शो करना पड़ेगा मुझे। दैट मींस -30x1 प्लस -30x1 प्लस 10x2 10x3 plus 80x4 should be less than or equal to 50. ये 2 कंस्ट्रेंट है बस, देयर इज नो थर्ड कंस्ट्रेंट। और क्या कंस्ट्रेंट है? आइदर आई विल एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट और आई विल रिजेक्ट अ प्रोजेक्ट। तो ये जो x1 की वैल्यू है, ये या तो 0 हो सकती है या फिर मैक्सिमम 1 हो सकती है, या उसके बीच का कोई फ्रैक्शन हो सकता है। बट इट कैन नॉट बी लेस देन 1, लेस देन 0, एंड इट कैन नॉट बी लेस देन 1, गो ग्रेटर देन 1। सो दिस मींस आई विल राइट हियर क्या, ये जो x1 है, दिस x1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। So this is the constraint. This cannot be more than 1 and less than 0. हो गया प्रोग्रामिंग खत्म। So PI की जरूरत ही नहीं, I can make a computer program for it. Linear programming can be used. इसीलिए मैं कहता हूँ PI is not that useful, but please remember, अगर नहीं आता लीनियर प्रोग्रामिंग आपको, तो फिर यही तरीका बचा आपके पास PI का। तो अगर 2 कंडीशंस मैच होती हैं, नंबर 1, प्रोजेक्ट आर डिविजिबल and there is capital rationing, PI is always better than NPV for ranking the projects. Any question here? Any question here?
सर हम लोग के यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी हमको मतलब डिसीजन लेने में वो होगा। हाँ डिसीजन लेने के लिए, लेकिन वो तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना आपका, एक्सेल बता देगा क्या करना है। आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में इसको मैनुअली सॉल्व नहीं करना, ओके क्योंकि सर। ऑपरेशनल रिसर्च का पेपर नहीं है ना ये। सर But yes, to come to a conclusion, you will have to solve it. Of course, you will have to get the values of x1, x2, x3, and x4. Otherwise, कैसे होगा? ठीक यस है? सर। चलो फिर अब अपनी क्लास है नेक्स्ट, तो फिर मैं नया टॉपिक शुरू नहीं करता। अब नेक्स्ट क्लास डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन एनपीवी वर्सेस आईआरआर, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा डिबेट है। थियरी भी आती है, क्वेश्चन भी आता है। और नेक्स्ट क्लास में हम आईआरआर कंप्यूट करना सीखेंगे, हम मॉडिफाइड आईआरआर करना सीखेंगे, हम ये भी जानेंगे कि हाउ वी कैन डिटरमिन द नंबर ऑफ आईआरआर्स इन अ प्रोजेक्ट, यानी देयर कैन बी मल्टीपल आईआरआर। क्या प्रॉब्लम है आईआरआर की, व्हाई शुड वी प्रीफर एनपीवी ओवर आईआरआर, ये डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। और अगर टाइम परमिट हुआ तो रिस्क एनालिसिस भी शुरू कर देंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो आई सर हाँ बताइए। सर इस पेपर के अकॉर्डिंग फिर हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लाइक ये हमें बना के दिखाना होगा बस लीनियर प्रोग्रामिंग? हाँ अगर आपसे वो ये कहेगा कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाइए तो इक्वेशन बना के छोड़ देना। बस इतना ही? और सर अगर हाँ नहीं बोलेगा तो मतलब ऊपर हमें एनपीवी वर्सेस पीआई जैसे ही करके दिखाना है? नहीं, अब आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना वो क्या पूछ